Okay, so last lecture में we were discussing pure substances. Pure substances का classification था. एक classification उन्होंने पढ़ लिया था, homogeneous and heterogeneous. And then next we have discussed another classification was element and compound. Element and compound. Most of us know what is an element and what is compound. Still, I'll discuss what is an element, right? So, what is an element? Element, they say, is simplest form of pure substance. Is what simplest form of pure substance having definite physical and chemical properties. Physical and chemical properties, and to be which can neither be broken into simpler substances, nor can be synthesized from other simpler substances. This is what we call an element. बड़ा बुकिश सा definition है, but फिर भी यही definition है. See, simplest form of pure substance. Pure substances, or what are things other than pure substances, is pure substances, and other things are mixtures, right? Whatever thing you see, whatever substance you know, whatever material you know, whatever form of matter you know, either will be pure or will be a mixture, right? So pure substances, maybe there is a classification. Element and compound, they are considered as pure substance. Abhi aapka air hai. Air is not an element, neither is a compound, right? In fact, it is not a pure substance, it's a mixture. Getting in? If you talk of air, it's not a pure substance, it's mixture. बहुत सारी gases हैं, कोई भी ratio कम ज़्यादा होता रहता है. कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी कुछ दूसरी gases का कंटेंट बढ़ गया. So the air is not an example of pure substance. Air is a mixture. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं mixture में, and rest of them are pure substances. Pure substances का classification है element and compound. Element and compound are two pure substances. अब उसमें element, how it is different from compound? Element is simplest form of pure substance having definite physical and chemical properties. ये तो compound में भी होता है. This is what distinguishes it from compound, which can neither be broken into simpler substances nor can be synthesized from simpler substances, right? But हाँ, ये भी एक complication है कि we know there are 114 elements now, out of which 94 only exist in nature. Nature में सिर्फ 94 है, 180 till now known, and 24 we have synthesized in lab, that is through radioactivity, right? Radioactivity से हमने खुद ने बनाया हुआ. तो अभी तो फिर elements भी आप synthesize कर सकते हो. Elements also can be made from other elements, right? Yes, sir. Okay, so 100 out of 118 elements now we know 94 are present in nature, and 24 can be produced in lab, can be made in lab from other elements. So this is again broken into simpler substances, nor can be seen. So this is again non valid. So what is a better statement? Now, with the help of atoms and molecules, we can define element as a pure substance, form of a pure substance, or some pure substance which are made up of
only one type of particle, only one type of particle, which is either an atom or a molecule, right? वापस बोलता हूँ. The better statement which distinguishes element from other pure substances, that is compound, is pure substance which are made up of only one type of particle, which is either an atom or a molecule. For example, iron, then copper, right? Then uh, magnesium. All these are what elements which are made up of atoms, right? And oxygen, hydrogen, all these are made up of molecules. You must have read O2, H2, and so on. Molecules और atoms में difference देखेंगे अभी हम लोग. But atoms, element का सबसे better statement क्या है? Pure substance which are made up of only one type of particle. अभी if you talk of air, तो air के अंदर एक type के particle नहीं है, बहुत सारे type के particles हैं. तो air is not an example of element. In fact, air तो pure substance में नहीं आता. वाटर के कांस्टेंट पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के, राइट? वाटर में अलग अलग टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल्स, एक ही टाइप के नहीं. बट इफ यू टॉक ऑफ ऑक्सीजन, दो सिंपलेस्ट सबसे स्मॉल पार्टिकल जो है उसका वो O नहीं है, O2 है, बट फिर भी वो सेम टाइप के पार्टिकल से बना है, राइट? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो O2 होगा, बट वो भी सेम टाइप के पार्टिकल से बना है, राइट? So pure substances which are made up of only one type of particle, which is either an atom or a molecule, is known as an element, right? And examples जो atomic form में iron, copper, magnesium, sodium, many other so are in atomic form, whereas oxygen, hydrogen, they all exist in molecular form. So molecules में मिलेगा, right? Then elements can also be further classified as metals, non-metals, and metalloids, right? So metals क्या होता है? What are metals? So metals are the form of pure substance or the elements which show some luster, that is reflection of light. Metals का characteristic क्या होता है? They reflect light. Metals reflect light, that is इसी property को luster नाम बोलते हैं. So metals are elements which reflect light, that show some luster, and many other properties are like malleability. ये सब junior classes में पढ़ा हमने. Malleability, ductility, right? Usually high density, exist in solid state except mercury, then high melting point, boiling point, high melting point, then boiling point, right? ऐसे बहुत सारी properties होती हैं इसकी metals की. Then what are non-metals? Non-metals do not reflect light, जिसमें luster नहीं होता है, right? Non-metals में, right? Mostly they are in gaseous form. Obviously यहाँ भी exception है. Then low melting point, low boiling point. जो metals की property है उसका exactly उल्टा है almost non-metals. Metalloids क्या होता है? Some of the materials are there which show properties of both of them, metals as well as non-metals. कुछ properties इसकी भी होती हैं, कुछ इसकी भी होती हैं. Those are classified as metalloids. Some examples given in book are arsenic, antimony, bismuth. These are some examples of metalloids. Then metals में तो ढेर सारे copper. Mostly almost 60%, 65% of elements are metals, right? Copper, iron, magnesium, sodium, many other. So many metals are there. Oxygen, all these are gaseous state में oxygen,
carbon, carbon is also a non-metal, oxygen, helium, hydrogen, they are non-metals, right? So this is how an element is defined. तो भले आपको पहले से पता है, लेकिन अगर आपको पहले इस चैप्टर के साथ स्पेशलिटी, अगर आपको पहले से कुछ नहीं पता हो तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग. वन सेकंड. तो अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं पता हो तो यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग. आपको लग रहा होगा क्लासिफिकेशन और मैटर क्या चल रहा है, ऑल ऑफ अस नो, बट लिटरली इट्स, मतलब अगर आपको knowledge now पहले से what is an element and all, and you a substance is shown to you, matter is shown to you, and if you ask to identify whether it is a mixture, element or what, आपको नहीं पता कॉपर क्या होता है, दिखता कैसे है, तो how will you do that? So these are some of the definitions or statements which distinguishes element from compound or mixtures or other materials, right? So मतलब किसी एग्जाम में नहीं पूछते, स्कूल एग्जाम में तो फिर भी पूछ लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस, बट एक बार पढ़ना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट वी से एन एलिमेंट. नाउ व्हाट इज अदर फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस? कंपाउंड. वी नो वेरी वेल, कंपाउंड इज अगेन अ प्योर सब्सटेंस. अच्छा, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं दे ऑल आर होमोजेनियस. प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजेनियस. प्योर substances are definitely homogeneous, because this is a separate classification, homogeneous and heterogeneous. तो pure substances जो होते हैं ना, they are always homogeneous, नहीं? चाहे आप element ले लो, compound ले लो, whatever pure substance you know, it is always homogeneous. So compound are what? Compound are pure substances, again form of pure substances, form of pure substance which is just the element cannot be formed, this can be, which is formed by combining two or more elements in a definite proportion by mass, in a definite proportion by mass. Yeah. Compound क्या था? Compound is a form of pure substance. Is a form of pure substance which is formed by combining two or more elements in a definite proportion by mass. तो दो या दो से ज्यादा elements अगर आपने एक डेफिनेट प्रोपोर्शन मास का रेशियो में कंबाइन किए हैं, सच दैट, इसमें भी क्लासिफिकेशन है. कल को आप बोलोगे सर मैं कॉपर और एल्यूमिनियम को मिक्स कर रहा हूँ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो कंपाउंड होगा क्या? तो दैट इज नॉट कंपाउंड. तो और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए इसकी? सो कंपाउंड इज व्हाट? फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, such that they can be separated into constituent elements by suitable chemical methods only. Plus they have properties different from the constituent elements. Yes, to compound क्या था? Compound is a form of pure substance which is obtained by combining two or more elements in a definite proportion by mass. They can be separated into constituent elements by suitable chemical methods only. They have properties different from the constituent elements. अब अगर now if you say कि सर मैंने कॉपर और एल्यूमिनियम को क्रश करके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाउडर जैसा करके दो पाउडर बना के नहीं उसका, बट बना के मैंने मिक्स कर दिया, तो will it be a compound? तो no, that will not be a compound.
बिकॉज पहला तो एक डेफिनेट रेशियो है, ठीक है, आपने बोला, मैंने उसमें डेफिनेट रेशियो भी रख दिया. They can be separated into constant elements by suitable chemical methods only. So कंपाउंड्स के बारे में क्या बता थे, ये चार प्रॉपर्टीज है. एक एग्जांपल देख लो. एग्जांपल, सपोज आई टॉक ऑफ वाटर. तो वाटर इज अ कंपाउंड और व्हाट? तो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड कहीं कोई भी सैंपल उठा के देखो आप, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8. दैट मींस वाटर is formed by combining hydrogen and oxygen in the ratio of 1:8 by mass. पहली चीज. Second देखोगे अगर हम, can they be separated into its constituent elements? Yes, can be separated to hydrogen and oxygen. ऐसा नहीं कि आप हीट करके सेपरेट कर सकते हैं. एक सुटेबल मेथड है. कौन सा? नेक्स्ट ईयर 12th में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे. बाय passing electricity through एसिडिक वाटर. एसिडिक वाटर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो वाटर कैन बी सेपरेटेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर फाइनली अगर आप देखो properties, so hydrogen is highly combustible. Oxygen favors combustion, whereas if you talk of water, अगर water की बात करो तो it acts as a fire extinguisher. So properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. वाटर की प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से एकदम अलग होते हैं, राइट? तो वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, राइट? देन आई होप इसमें ऐसा बहुत ज्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं, बट फिर भी एक बार मुझे बता देना है.